Jai Jinindra, Namaste, Vanakkam, welcome back. So today, I hope you have enjoyed your weekend. So tomorrow is Monday. Today we are going to look out for the levels. What happened last week? What we can expect in the coming weeks? What are the levels we are looking out for? Right? So before starting, I think so this disclaimer is needed. Where is the disclaimer? This one. Right? So this channel is for education purpose and you have to consult your financial advisors before investing. ठीक है? चलो. So let us begin off what we are looking at. Since we have completed the week, we will be looking out for trades from monthly. What is monthly? Monthly, the current candle is a running candle, right? It is above 5 EMA, that is a good sign, but still it is a running candle. Let us move on to the weekly. Weekly, we have got a good green candle, right? But in weekly, I can see something wherein I would like you to mark it. Can you see this? Right? So we have to, once we cross this dotted green line, you can see, which we have discussed in the last video also. After that, to confirm the uptrend in a bigger time frame, we have to cross this trend, right? हायर हाई एक करना जरूरी है ना, ठीक है? So weekly, a good green candle formation, that is a good sign. Daily, yes, daily we discuss this dotted line has to be crossed so that एक W का breakout का एक level आ सकता है, but complete breakout यहाँ से नहीं है. We have some hurdles in between also, right? And this upward movement, see, what is I am looking out on a daily is, even though we have got uptrend, but this trend, can you see the candles which we have formed are not that strong candles, right? So एक डिमांड जोन, नीचे जो भी कोई डिमांड जोन रहेगा या एक छोटा सपोर्ट रहेगा वो तोड़ेगा एंड मेजर सपोर्ट लेगा एंड देन इट विल स्टार्ट मूविंग, right? This is what I am seeing it, but since these candles are not very strong, we have to uptrend के लिए trades जो भी है that has to be taken very carefully, right? Even downtrend carefully, मतलब trades अभी जो ले रहे हो that is एक carefulness से लेना बहुत जरूरी है, ठीक है? 4 hours, let us find some demand zone. Can we see a demand zone? The answer is no. But we have a strong supply zone over here, that is this level. This is a strong supply zone, right? So yeah, demand zone देखो ना, यहाँ पे एक बहुत rally based rally is there, but this rally is not a good rally as compared to this rally, but this we have already marked as a resistance for last April बोलता हूँ मैं, Friday के लिए this was the resistance. Let us discuss out what happened on Friday and how the trade was formed, where we could have traded, what we have done, right? We opened gap up, right, above our resistance, but we did not cross our first level, right? And I have said many times, अगर
फर्स्ट 15 मिनट रेसिस्टेंस के ऊपर कोई भी क्लोजिंग आता है, it acts as a support, right? Can you see, did it act as a support? The answer is yes. Yes. So from here we took up a call side trade. Obviously इधर क्रॉस करने के बाद ट्रेल हुआ. You got it? So after trailing hit हुआ रहेगा यहाँ पे किधर भी आपका. But did we cross 25,162 or did we touch 25,162? The answer is no. So what we are looking out to come in the tomorrow's trade is एक रिट्रेसमेंट पे ही जाना जरूरी है, and एक रिट्रेसमेंट अभी आना जरूरी है, so that मतलब हेल्दी अप ट्रेंड बोल सकते हैं उसको. Do you get it? When we call it as a healthy uptrend is एक रिट्रेसमेंट आता है, फिर तुम्हारा 50 EMA बोलो या डिमांड जोन बोलो, वहां पे एक बाउंस आता है. दैट इज अ हेल्दी अप ट्रेंड. डाउन ट्रेंड में एक अपवर्ड मोमेंटम मिलता है और सप्लाई जोन से नीचे आता है, तो वो हेल्दी डाउन ट्रेंड होता है. लेट अस सी ओवर हियर. एक हाथ डाउन ट्रेंड हम लोग सी. डाउन ट्रेंड है बट थोड़ा ऊपर आया, देन इट केम डाउन, राइट? साइडवेज बेसिंग करके थोड़ा ऊपर आया, देन इट केम डाउन. सो दिस इज हेल्दी. यू गॉट इट? तो यहां पे भी एक हेल्दीनेस आना जरूरी है. सी डाउन एंड देन वी आर मूव्ड अप. सो यहाँ पे एक डाउन एंड देन मूविंग अप इज एन हेल्दी वन. तो उस टाइम पे 25,162 जब तोड़ेगा, डाउन आके फिर तोड़ेगा, देन दैट इज अ हेल्दी वन. ठीक है? वी विल बी लुकिंग आउट फॉर द OI ऑल्सो एंड ग्लोबल मार्केट ऑल्सो टू अंडरस्टैंड where the opening can come and what should be done. ठीक है? So let us mark the levels first, then we will look out for the global scenarios and FI and DI data. ठीक है? This dotted line remains same for me because this is what we have been discussing about for last 1 week. So this is my support. This is going to be my resistance. वो रेसिस्टेंस तोड़ेगा 25,162 तोड़ेगा, then we can look out for 25,250 levels. That is a healthy and a good one, right? And ये ग्रीन को हटा देते हैं. Right? So tomorrow I have to open above I have to stay above. See, there is a demand zone over here. Let me थोड़ा बड़ा करता हूँ तो थोड़ा दिखेगा. Right now? Can you see a rally base, rally? This is the demand zone. So tomorrow, if I come over here and I take a bounce in a 5-minute candle, then that is a good one. इसके नीचे अगर जाता है, this blue line के नीचे अगर जाता है, this will act as a strong support, right? Because earlier वहाँ पे gap up होने के बाद it did not come down, right? And if it comes down, then I'm looking out for the 24,990 levels, and if that breaks, then this will be acting as a major support, 24,916 levels, right? उसके नीचे फिलहाल तो नहीं दिख रहा है और नहीं देख रहा हूं, but I should be ready, you know it, right? We should be ready for what is coming next. Okay, chalo, these are the levels which are for
tomorrow, this is not 3x, I will be putting it up a line, alright, okay, but a slight line. So tomorrow, what I am looking out for, if I open gap up, अगर gap up opening आता है and if it is above this resistance which is at 25,140 levels, I would wait for the Nifty to cross 25,162, and if I found a good green candle, now here comes the new learnings for every one of you. Let me show you something what I look out for. Gap up opening, right? And if I form a green candle over here, right? My trade is not executed over here, huh? Note it down. And if I cross 25,162 with a green candle, तो ही लॉन्ग पोजिशंस के लिए मैं रेडी होऊंगा. Did you get me? Right? Sometimes it happens कि आप 25,162 क्रॉस कर रहे हो with a green, but यहाँ पे किधर रेड रहेगा ना? Right? This is the resistance. If we have a red candle over here and a green candle over here, I would avoid the trade. Did you get me? Why I would avoid the trade is, हायर हाई करने के लिए बाहर तो आया है, बट कहाँ ना कहाँ weakness है. There is somewhere weakness is there. That's the reason I'm telling you. If there is a red candle over here at 25,140 levels and you cross 25,162 with a green candle, I would like to avoid my trades, because somewhere there is a weakness, and even if I enter the trade, I would start trailing immediately. Did you get me? Right? Gap up opening ही आ गया and 25,162 के ऊपर ही आ गए हैं. Obviously थोड़ा careful रह के ट्रेड करना है. Immediately तो कुछ ट्रेड्स नहीं आएगा. ठीक है? This is gap up opening. Say flat opening. Flat opening आएगा. I would wait for Nifty to come down till 25,078, जहाँ पे डिमांड जोन भी है, और वहाँ पे I can, if a green candle is formed, I can start a long position और ट्रेल करूँगा till this resistance. You got me? Flat opening होएगा तो क्या करना है? Suppose gap down opening आया, and if it is near this blue line, 15 मिनट्स वेट करूंगा, क्या डायरेक्शंस दे रहा है, क्या फॉर्मेशन दे रहा है, उसके बेसिस पे ईएमएस क्या है, आरएसआई क्या है, एडीएक्स, वॉट एवर टूल यू आर यूजिंग इट, उसका स्टडी होएगा, देन एक डिसीजन लिया जाएगा. ठीक है? एंड इफ देयर इज अ गैप डाउन बिलो दिस ब्लू लाइन, सिंपल है, दिस विल एक्ट एज माई स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस, सपोर्ट. सपोर्ट पे ग्रीन कैंडल आएगा तो मैं लॉन्ग करूंगा, अदरवाइज सपोर्ट पे रेड आया, एक शॉर्ट ट्रेड आता है इमीडिएटली 25,035 के नीचे 24,990 लेवल्स, 24,960 लेवल्स एंड देन 24,916 लेवल. उसके नीचे तो नहीं दिख रहा है, एक दिन में इतना नीचे भी नहीं आता है, until there is a major something happening. ठीक है? So today we discussed for tomorrow where you can trade and 3 scenarios जो हम लोग हमेशा डिस्कस करते हैं, वो सिनेरियोज भी हमने डिस्कस कर लिया. ठीक है? चलो लेट अस सी द ग्लोबल डेटा. ग्लोबल डाउ नेगेटिव, Nasdaq positive, GIFT Nifty negative. ठीक है? So it's neutral. I would say I would be neutral for tomorrow. जो प्लान किया है वो प्लान के हिसाब से जहाँ ट्रेड मिलेगा
जहाँ सेटअप रेडी होएगा वहां पे ट्रेड एग्जीक्यूट होएगा, ठीक है। सो यू वी हैव नाउ लेवल्स फॉर निफ्टी। बैंक निफ्टी सेम है, सिर्फ इतना है कि ना थोड़ा चेंजेस, इसमें भी मंथली से आना है। चलो आते हैं मंथली से। मंथली करंटली रनिंग कैंडल ग्रीन है बट ट्रेंड इज कंप्लीटली डाउन, सो आई वुड नॉट से इट इज अपसाइड के लिए है। सी वीकली भी देखो, ट्रेंड अभी भी डाउन है बैंक निफ्टी में, एंड बैंक निफ्टी वी हैव अ लिटिल गैप ओवर हियर, कैन यू सी इट। अर्लियर यहाँ पे रेसिस्टेंस था, वो अभी सपोर्ट लेने का है, तो दैट इज अ गुड साइन। बट 50 EMA यहाँ पे है, सो दैट वुड बी अ पॉइंट टू बी नोटेड। 50 कौन सा लेवल्स है ये, 53,200 के लेवल्स है, ठीक है। सो ऑन अ डेली ट्रेंड अप करने की कोशिश है, बट दैट इज अ बिग सप्लाई जोन ओवर हियर, और 50 EMA भी यहाँ पे भी यहीं है 150 लेवल्स पे। सो 55,000 का स्टॉक को 200-300 पॉइंट्स मोमेंटम करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। सो अगर ऊपर भी आ रहे हैं, until and unless we have a closing above the supply zone, ट्रेंड अप के लिए रेडी नहीं है, ठीक है। सो बैंक निफ्टी 4 आवर्स केस में डू वी हैव एनी डिमांड जोन ऑन द बिलो? नो। 2 hours do we have any demand zone? Nahi. But yes, there is a supply zone over here, drop based drop, that is a good one. So now kya, this would be our one of the level. समझा? ठीक है। 15 minutes 55,850 is my resistance, सपोर्ट में अभी भी यही लूंगा, 54,450 लेवल्स को सपोर्ट लूंगा, राइट। मिड पे दिस इज 54,576 जो है, दैट इज अ ब्लू लाइन। जब तक इसके नीचे नहीं जाएगा बाय ऑन डिप्स करूंगा। इसके नीचे गया, ऑब्वियसली थोड़ा नीचे की तरफ है, एंड वी हैव अ गुड डिमांड जोन ओवर हियर, दिख रहा है। ड्रॉप बेस रैली 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 रैली, बाप रे 4 रैली है। सो दैट विल बी अ गुड डिमांड जोन। यहाँ पे गैप भी है विच इज येट टू बी फिल्ड, राइट। हाफ द वे भी नहीं आए हैं, हाफ द वे यहाँ पे है 54,350 लेवल्स। सो बैंक निफ्टी दिस इज रेसिस्टेंस, मार्क कर लेते हैं फटाफट से लेवल्स। 54,850 is my resistance. If I break that resistance, I can look out for 55,010, then 55,105। उसके ऊपर इंट्राडे में 2 लेवल्स ही देखते हैं, थर्ड लेवल थोड़ा एक्सट्रीम केस पे आता है, राइट। इफ आई ओपन गैप डाउन and if I stay above 54,576 levels, it would be buy on dips. अगर वो तोड़ते हैं, I can look out for 54,445 and then 54,280 levels, ठीक है। Not below that. उसके नीचे के levels I am not seeing it, or at least on an intraday basis in Bank Nifty, ठीक है। So today Nifty Bank Nifty हमने discuss किया। I am skipping out Midcap Nifty and Sensex, कि सेंसेक्स चाहिए। मिड कैप निफ्टी थोड़ा स्किप आउट करते हैं, बिकॉज मिड कैप निफ्टी ऑलमोस्ट सेम लेवल्स पे ही है, एंड इतना साइडवेज मोमेंटम में मिड कैप निफ्टी प्रीमियम बहुत ईट कर लेता है, एंड लॉट साइज इज वेरी हाई। दैट इज द रीजन यहाँ पे ट्रेड पे काम करना बहुत मुश्किल है, एंड इट वुड बी ऑलवेज अ बाय ऑन डिप्स इन मिड कैप निफ्टी, ठीक है। लेवल अभी भी सेम ही है। सेंसेक्स, लेट अस चेक इट आउट। सेंसेक्स सेम निफ्टी जैसे ही लेवल्स हैं अभी भी,
सो थोड़ा मूव आउट कर लेते हैं फटाफट से। राइट, डिड यू गेट इट? अभी लेवल्स मार्किंग तुम खुद भी कर सकते हो, इतना तो तुम्हें प्रैक्टिस हो चुका है, इतना दिख रहा है मुझे। मेनी ऑफ यू हैव डन अ गुड होमवर्क। राइट, एंड देन यहाँ पे लेवल्स, या दिस इज फॉर इंट्राडे। ठीक है, चलो FII डेटा बाकी है अपना, वो कहाँ पे देखते हैं? आई प्रिफर स्टॉकेज, स्टॉकेज आई गेट अ गुड डेटा। राइट, oh 8,800 करोड़ निफ्टी में पंपिंग हुआ है, दैट इज अ गुड वन। बाइंग स्प्री आया है FII में थोड़ा सा, कंप्लीटली अभी तक बाइंग में आए नहीं है वो। DII इज स्टिल इन अ बाइंग स्प्री। राइट, देखो सब जगह ग्रीन ही है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द अमाउंट, आई एम जस्ट सीइंग द ग्रीन अमाउंट्स। सो DII इज अ नेट बायर इन सितंबर स्टिल, सो अच्छा साइन ना। मतलब डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स आर still buying in our equity market. ठीक है, so now the third one what we look out for is obstra, open interest. Open interest is neutral, PCR is neutral, right? 25,000 के levels पे ही मेजर हैं put writers. Fine, so that is all for Nifty, Bank Nifty and Sensex. Mid cap हम लोग नहीं डिस्कस कर रहे हैं। Now let us look out for the equity. Fedfina cost पे ही है, Dixon above cost, good one movement, 900 points away from our targets, all of them are positive. Reliance coming back into the our buying spree but added है थोड़ा बहुत नीचे, that is a good one. TCS above our cost, Mothers and Sumi good sign, 4% का up movement मिला है. IGIL we have got a above 370 के levels आए हैं, that is a good one. Asian Paints at cost, Agility still at cost. BDL में momentum आया, that is good one. BDL one day, see BDL में momentum आया है, यहाँ से ही रिटर्न आया, वापस वहाँ पे ही आए हैं. So this time we can look out for once this supply zone is taken out, we can look out for going a good big upside momentum. HIL, it is a superb one. Now we have 10 rupees above cost है, यहाँ पे थोड़ा बहुत ऐड करने के लिए भी बोला गया था. HCL below cost, right? And today we are looking out for some penny stock investments, right? बहुत सारे जन ने penny stocks के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था. सो मंडे को हम penny stocks में कौन सा देखेंगे, राइट? थोड़ा बहुत स्क्रूटनी है. Ultimately you have to look out for the charts also and you have to look out for your own risk management. उस बेसिस पे ही आप उसका चेकआउट करना, ऐसे ही डायरेक्टली नहीं. Infibim Avenues और this one, which one? लीडिंग लीजिंग फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टमेंट, वो हम लोग दो चेक करेंगे. बाकी GTL एंड जयप्रकाश पावर्स वापस यू कैन लुक आउट फॉर गोइंग इन. बट टुडे आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट 2
I'll be seeing about the two charts. Penny stocks, ठीक है, क्या देखेंगे? इन्फीबीम एंड दूसरा कौन सा था? लीडिंग लीजिंग। यही है ना? हाँ, इसमें आई वुड बी सीइंग ओनली वीकली, मंथली एंड डेली चार्ट, नॉट लेस देन दैट। ओके, यहाँ पे वी हैव अ डिमांड जोन एट अराउंड 3 रुपीज। ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी स्टॉप लॉस 1 रुपया, क्या रखेंगे? ठीक है, आई वुड बी गोइंग अहेड विद दिस वन फॉर टुमारो, राइट? 5 रुपीज का स्टॉक है। ओके, इसके पीछे का रीजन सी, टेक्निकली 5 रुपए का स्टॉक है, कुछ मोमेंटम नहीं है, कुछ नहीं, बट क्या देखा लीडिंग लीजिंग फाइनेंसिंग में? क्या देखा? सिंपल, अभी आप चलो व्हाट वेयर आई लुक आउट फॉर, स्क्रीनर में जाते हैं, राइट? और यहां पे कंपनी इज इनटू लीजिंग एंड फाइनेंसिंग, राइट? मार्केट कैप 311 करोड़ है। प्रॉफिट एंड लॉस क्या है? ओके, सेल्स है इतना, एक्सपेंसेस इतना, प्रॉफिट इतना है। यू गॉट इट? प्रॉफिट तो कर रही है कंपनी। कैश फ्लो देखते हैं। देखो, कैश फ्लो शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव। कंपनी में कैश रहेगा तो ही तो काम होएगा ना। जो क्राइटेरियाज मैंने चेक किए हैं और जिस वजह से आई एम जस्ट प्लानिंग टू इन्वेस्ट इन दिस वन। कैश फ्लो इज पॉजिटिव, डिड यू गेट इट? कैश फ्लो पॉजिटिव है। प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट कर रहा है। अभी इन्वेस्टर्स देखते हैं, कैन यू सी दिस? कौन है इधर? FIIs बहुत है, जो फंड मैनेज कर रहे हैं ना, उन लोगों का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे बहुत है। एंड वो सितंबर 2024 से इंक्रीज डिक्रीज जो कुछ भी बोलो, राइट? सो दिस इज मेजरली मैनेज्ड बाय फंड मैनेजर्स। यहाँ पे प्रोमोटर्स कोई नहीं है। बैकड्रॉप यही है कि यहाँ पे प्रोमोटर्स नहीं है, बट 56% इज हेल्ड बाय द फंड्स, different funds. I have not got into that ये one. Public कितने हैं शेयर होल्डर्स? 13,706 708 सॉरी। सो मोटा मोटी कुछ तो चल रहा है कंपनी में, कुछ तो अच्छा है, राइट? तो 6 रुपए का रिस्क तो बनता है। सो नाउ इट इज अप टू यू व्हाट रिस्क you are trying to plan. So my क्या करेंगे कल? LL क्या है? लीडिंग लीजिंग, इसका वेट, LLFICL LLFICL BSE का स्टॉक है, राइट? तो रिस्क तो वैसे भी उतना ही है। सो वॉट एवर द ओपनिंग वी विल बी गेटिंग टुमारो, 5.6 मैं पकड़ रहा हूँ, राइट? सो हाउ मेनी शेयर्स? SL is 0। तो टारगेट क्या रहेगा? 17 रुपये तो आना चाहिए।
ठीक है. So what is the quantity which we'll be looking out for? Let us copy this completely. If you are planning for an 1800 risk, you can buy only 321 shares. तो मैं 321 लिख रहा हूँ यहाँ पे. And if you are planning to have a risk of say 10,000, so you can buy 1786 shares. ठीक है. So tomorrow I am planning for क्योंकि यहाँ पे SL is 0, I am planning for an investment of 10,000. तो 10,000 का रिस्क हम लोग कर ले रहे हैं फॉर LLFICL. एक हुआ, उसके पीछे का रीजन भी मैंने बता दिया. इन्फी बीम मंथली इतना बड़ा डाउन कब आया है? 2018. फाइन. बीच में 2024 में यस वी हैड एक अपसाइड मोमेंटम आया, बट अगेन इट केम बैक टू द लेवल फ्रॉम वेयर इट हैज स्टार्टेड मूविंग. सो दैट इज ऑल्सो थिंग विच मतलब सेकेंड टाइम कुछ अपॉर्चुनिटी दे रहा है. वीकली फाइन. सो ट्रेंड इज कंप्लीटली डाउन, बट वॉल्यूम्स हैं थोड़े. दैट इज ऑल्सो गुड वन. अभी इसके पीछे का हम लोग जरा देख लेते हैं. इन्फी बीम एवेन्यूज, what I have looked out for and what we are planning. 5151 करोड़ का मार्केट कैप है. गुड वन. प्रॉफिट एंड लॉस क्या है? प्रॉफिट है 302 करोड़ का. राइट. सेल्स भी इंक्रीज हुआ है. कंपैरेटिवली एक्सपेंस भी इंक्रीज हुआ है. एक्सपेंस किधर इंक्रीज हुआ है? ओके, देयर इज नो गुड डेटा ऑन वेयर द एक्सपेंसेस हैव गॉट इंक्रीज्ड. मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ही इंक्रीज हुआ है, सेम लेवल्स पे है. एम्प्लॉय कॉस्ट सेम लेवल्स पे है. तो एज सच इतना इंक्रीज नहीं है. फाइन. एटलीस्ट प्रॉफिट्स में दैट इज अ गुड साइन. Now let us see the cash flow. Oh, cash flow नेगेटिव है. कैश फ्लो नेगेटिव क्यों है? ये मेरा क्राइटेरिया के अगेंस्ट हो गया. अदर इन्वेस्टिंग आइटम्स, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, सेल प्रोसीड्स हुआ है. से शेयर्स बेचा है इन्होंने टू पे ऑफ सम डेब्ट्स. लेट अस चेक. इन्वेस्टर्स, प्रोमोटर्स होल्डिंग है, FII का होल्डिंग है, DIS के भी होल्डिंग है. पब्लिक के पास ज़्यादा है. ओके, समथिंग हैज़ गॉट मिस्ड. पीस एनालिसिस. This was the reason it came into the radar. डेप्ट फ्री है, इस वजह से शायद ये आई हैव इग्नोर्ड द कैश फ्लो. बट कैश फ्लो इतना बड़ा नेगेटिव शुड नॉट बी इग्नोर्ड. तो इन्फी वी विल बी गोइंग अहेड टुमारो एट द प्राइस 1594 है. 16 रुपीज में पकड़ रहा हूँ. Infi Beam Avenues 16 rupees investment, but yes, instead of 10,000 I would be taking a risk of only 5,000. ठीक है. 0 है. 48 रुपीज तक जा सकता है क्या? जा सकता है. बहुत टाइम लेगा. जितना टाइम आने के लिए लिया है ना, उसे डबल टाइम ऊपर जाने के लिए लेगा. So it has taken more than 1.5 year to come over here. तो 3 साल का हॉरिजॉन पकड़ के चलना फॉर 48 रुपीज का टारगेट के लिए. राइट. So this is the 2 penny stock which we have planned for tomorrow.
In coming weeks we will be planning at least another 3 penny stock जहाँ पे टोटल 50,000 का एक रिस्क रहेगा, नॉट मोर देन दैट, एंड सोच समझ के रहेगा, राइट. सो बहुत सारे चीजें, बहुत सारा वर्किंग्स है इसके पीछे. कंप्लीटली आई एम नॉट डिस्कसिंग इट आउट ओवर हियर. मेजर कहाँ से क्या क्या चीजें लिया है, that I have discussed out with you. Screener is the thing which I look out for the balance sheet data. That also you know it now. Majorly सब लोग वही यूज करते हैं. टेक्निकल्स पे थोड़ा ज़्यादा फोकस्ड रहता हूँ टू अंडरस्टैंड कि कंपनी में चल क्या रहा है, राइट. सो दिस इज द, हाँ इसका एक है बिलो 7 रुपीज वी हैव टू लीव. तो 7 रुपीज का स्टॉप लॉस लेके चल सकते हो. ओवर हियर यू कैन हैव अ स्टॉप लॉस ऑफ 7 रुपीज, राइट. सो टुमारो वी विल बी बाइंग 555 क्वांटिटी. Sorry. So, did you get it? 2 penny stocks entries on 15th of September. ठीक है. So this is for today. Have a safe trading tomorrow. Have a profitable day. Take care. See you soon tomorrow evening. Thank you.